Okay, so today we are going to learn about squares and square root functions. Okay, how the graph of f of x is equal to x square and g of x is equal to square root of x related. So let's learn. First of all, we are going to learn about f of x is equal to x square. So if x is equal to minus 3 x square, y would be equal to x is equal to, so it would be like this. If x is equal to minus 3, so y would be equal to minus 3 square, which is equal to 9. 4 1 0 1 4 9. So let's plot this. Okay, it's minus 3, so it would be 9. Minus 2, so it would be 4. Minus 1, so it would be 1. 0 1, so it would be 1. 2, so it would be 4. And 3, so it would be 9. So this is something that we will get. Okay, g of x is equal to square root of x. So now if x is fx is 9 4 1 0 minus 1 minus 4 minus 9, so square root of x would be 3 2 1 0. Square root of negative number does not exist, does not exist, does not exist. So the graph we're going to get is, for 9 it would be 6 7 8 9, it would be 3. For 4 it would be 2. For 1 it would be 1. For 0 it would be 0. For minus 1 it would be nothing, because minus 1 does not exist. The graph is going like this. This point is called the vertex point. So this is the graph of f of x, and this is the graph of g of x. So if we restrict the domain, of f of x is equal to x square to 0 to positive infinity, then what will happen? F of x and g of x are inverses. Okay, cubic and cube root functions. F of x is equal to x cube, g of x is equal to cube root of x. Okay, so let's take x is equal to 0, negative 1, 2, negative 2, 3. 0 cube root, negative 1, cube of negative 1, cube of 2, cube of negative 2, 27. Okay, 0, graph is going in this direction. Zero, 1, negative 1, 8, negative 8, 0, 1, negative 1, 2, negative 2. Okay, so this is the center.
and in this case f of x and g of x are inverses. So if we have the cube root, then cube and the cube root are inverses of each other, and square root are not inverses of each other. Square and square root are inverses of each other in case we restrict the domain of the square function from 0 to infinity. Okay, now what is absolute value function? Absolute value function will make the negative numbers to answer in the positive way. All negative numbers will answer in the positive way. Okay, so 0, 1, 1, -1. -1 will also give the answer with positive 1. -2 with positive 2. Plus 0, 1, 2, 3 with positive 3. -3 with positive 3. So absolute function is going to go in this direction. So the graphs of the absolute function make a perfect V-shaped graphs of absolute function. And what is axis of symmetry of absolute function graphs? X is equal to 0. Now these are the graphs of some common parent functions. Linear graph is in this way: y is equal to x, where y is equal to mx plus c, where what is m? M is the slope and this is the y-intercept. Quadratic function is y is equal to ax square, where a means shape of vertical reflection or vertical compression over x-axis, and h and k means the vertex. Cubic function y is equal to x cube is the cubic function, where a means shape, vertical reflection, vertical compression over x, and h and k means center or vertex. Exponential function means a means the shape or the initial value which we need to take to make the function exponential, initial value, and h and k will be the new x and y axis. Logarithmic function is a is the initial value and hk is the new x and y axis. Absolute value function is the shape or the slope, hk is the vertex. Square root function. Square root function a is the shape, vertical reflection, vertical compression over x-axis. hk is the vertex. Cube root function is the shape, vertical expansion, vertical compression over x. hk is the center or vertex. Reciprocal function is a 1 over x minus h plus k, where h and k is the vertex and a is the vertical. Okay, now we have to do some exercises which are based on the functions that we have already learned. Follow these steps to write the equation for the graph of g of x. Identify the type of function. So which type of function is this? So we know that this function is of type cubic. This is cubic function x cube. What is the transformation equation for this function? Okay, so what is the cubic function? Cubic function is a function y is equal to ax minus h whole cube plus k. So the main equation is
y is equal to a x minus h whole cube plus k. Okay. Identify the vertex or center and we write the equation using these h and k values. What is the vertex and center for this equation? The vertex and center for this equation is this one, which is 4 from the x-axis and minus 1 from the y-axis. So we can write this equation again as y is equal to a x minus 4 whole cube minus 1. Pick a point other than the vertex or center and use this to calculate a. Okay, let's take this point. This is 5, 6 from the x-axis and 1 from the y-axis. Okay, now using these 2 points we can find a. Okay, y is equal to, sorry, the point was 6 and 1. 1 is equal to a 6 minus 4 whole cube minus 1. So a is equal to 1 by 4. Now we can rewrite the equation as y is equal to 1 by 4 x minus 4 whole cube minus 1. Come to the next exercise. For each graph below, identify the type of function and then write the equation. Now which graph is the first one? This is going like this. So this is a square root function. Now what is the equation for the graph of the square root function? Square root function. Y is equal to a square root of x minus h plus k. So the graph should be y is equal to a square root of x minus h plus k. What is h and k? The center point. Okay. Or the initial value. H and k are the initial value of the center point. So it's -4 and -6. And what will be a? We need to take 2 points. Let's take this point, 0 from the x-axis and 2 from the y-axis. Okay, so it would be this is a cubic function, and the graph of the cubic function can be written as y is equal to a x. You need to learn the equations of all the graphs. Cubic function is a cube root of x minus h plus k. Okay. This is the center, so this is -3 and 2.
Okay, so which function is this? This is absolute value function. Okay, what is the equation for the absolute value function? Y is equal to mod of x. Y is equal to a x minus h mod plus k, where a is the slope. Y is equal to a mod of x minus h plus k, where a is the slope. So what is the slope over here? It is moving to rise by 1 1 2 3 3. So m is equal to 2 by 3, which is rise by 1. So it is equal to 2 by 3 x minus h plus k. What is h and k? H and k is the vertex, that is plus 3 minus 6. Y is equal to 2 by 3 x minus, so 2 by 3. Okay, what is this graph? This graph is now cube root graph. Okay, so it is y is equal to a cube root of x minus h plus k. Okay, what is h and k is the center value, and that is this one minus 1 and plus 4. Y is equal to a cube root of x plus 1 plus 4. Let's take another point, for example this one, 6 7 7 5. Okay, so it would be 5 is equal to a Okay, consider the function f of x is equal to, just identify the vertex or the center. What is the vertex? H and k. So x minus h, so vertex x minus h minus 4. Create a table of values, use numbers that you can take the square root of. Plot the point and connect with a smooth curve, clearly showing the end behavior. Minus 5 minus 4 minus 4 minus 1 minus 1 plus 2 plus 4 plus 5. Consider the function g of x is equal to this. Identify the vertex.
Okay. Consider the function minus 3 by 2 x minus 4 minus 1 mod function. So the vertex is 4 minus 1. You do not need to table the values of an absolute value graph as long as you know how to graph slope or rise over run. What is the slope of this function? Minus 3 by 2 is the slope. Minus means reflection and 3 means rise and 2 means run. So 3 means rise. What is the slope of this function? Minus 3 by 2. So 4 and negative 1. 4 and negative 1 is the vertex. And we're going to go in the opposite direction because there is a sign of negative. 3 means 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Then 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Plot the vertex from the vertex, rise down 3 and run to right point. Put a point. Go back to the vector down 3, 3, run point, and we will draw B like this. Sketch the graph for the function. Be clever about the numbers you select for your table of values. Include at least 3 significant points, including the vertex and the center. So first of all, we should know what is the vertex and what is the center. Okay, so vertex in the center is 3, 2. Okay, if I will put 3, 3 minus 3 would be 0 and you will get the answer 2. So next you can put 4, 4 minus 3 would be 1, 1 by 2 plus 2 would be 2 whole 1 by 2. We'll put 2, 2 minus 3 would be 1, and again you will get 1 whole 1 by 2. If you will put 5 you will get 6. If you will put 1 you will get minus 2. Three, 2, 4. We call that to find inverses of a function algebraically. You need to switch x and y and then solve for y. Find the inverses of this function. So we need to switch y is first of all we will write y is equal to 2 x plus 4 ka whole cube minus 6. Now we are going to switch x and y. Now we are going to solve for y. Okay, let's do the next one. Let's switch x and y. Okay, when do you need to restrict the domain of the inverses?
when the function is not one-to-one. In this function, we need to restrict the domain of the inverse, because if I will put 3 over here, it will become 0. So the domain should be restricted to 3 to positive infinity. So when we're going to restrict the domain when function is not one-to-one, quadratic or absolute value. In quadratic functions and absolute value functions, we need to restrict the domain. Okay, use the function composition to verify the functions are inverses and so on. So using function composition is easy. It is f g of x, which is equal to f, what is g of x? Cube root of minus x minus 2 plus 3. This is g of x. Okay, so now we're going to put it in f of x minus, we're going to put x minus 3 cube plus 2. So what you're going to get is minus x plus 4. Gf of x. Df of x, g of x cube root of minus x so not inverses because they are not equal to each other. Okay, problem number 6.1. Write the equation for each of the following. A cubic function shifted 5 units down. So what is a cubic function? X cube. So y is equal to x cube minus 5. An absolute value function, okay, reflected across the x-axis, it means y is equal to a negative sign. Vertically stretched by a factor of 2, shifted to the right and moves up. A square root function vertically compressed by a factor of 1 by 4, shifted 2 units to the right and 7 units down. For each graph, we'll identify the type of function and then write the equation. Okay, type of function, this is a cubic function, and the graph, this is the center, this is 1 and minus 4. Cubic function can be written as y is equal to ax minus 1 ka whole cube minus 4. Taking another point, let's take this one, 2 and minus 2. So it would be minus 2 .
Okay, which one this function is? This is a square root of x. Initial value is 3, 2. This function, cube root function. This is cubic function and this is cube root function. Okay, so the center point is this. If we will take this point, this is 4 and 6. This is absolute value function. Okay, so absolute value function was y is equal to m x minus h plus k. So what is m? Rise over run 1, 2, 3, 1, 2, 3 by 2, and it's in the opposite direction. X minus h. What is h? This is minus 3, 5. Graph each square root function showing at least 3 significant points. So for graphing the function, we need to find the values of x and y. Okay, let's take 4. 4 minus 4 is 0, so we will get 3. We will take 5. 5 minus 4 is 1. 1 plus 3 is 4. We will take 8. 4. 8. 8 minus 4 is 4. Square root 2. 2 plus 3 is 5. Okay, write an equation for the function f of x graphed here.
This is a square root function. So it would be a x minus h plus k. Okay, so now to find the value of a, we will put 5 0. Four two. Okay. We need to find the equation of F inverse x algebraically. So we can write it y is equal to 3 by 2 x minus 1 minus 3. And we can do it like this. We need to switch x and y. Now because this is a square root function, so we need to restrict our domain, that is minus 3 to 4, minus 3 to positive infinity. Graph each cubic and cube root function showing at least 3 points. Okay, now we need to graph the cube and the cube root functions. For graphing, we need to take the values of x and y. Okay. Graph each absolute value function showing at least 3 points, significant points. Okay, so absolute value function, the main thing for absolute value function is this 5 by 2, and it's 3 and minus 4. So it's going to be happen that, okay, so it is minus 3 and minus 4, and it will go in the upper direction too.
Okay, find the inverse algebraically, restrict the domain if possible. So this is a cube root function, so we're going to write it y is equal to cube root of x minus 4 minus 2. Now we're going to change the x in the y, switch x and y. Okay. Use function composition to verify whether or not the following functions are inverses of each other. So for using function composition, we need to find f g of x.
Now we're going to put it in f of x. Now there is some extra practice for you. For each function showing at least 3 significant points, draw the graph. For f of x is equal to minus 2 x plus 3. So let's see this.
Write the equation for each of the graph. Now the graphs are given, we just need to write the equation. It is very simple that we have already done. This is a cubic graph. Center is minus 3, 0. So y is equal to minus x plus 3 ka whole cube. This is square root. And it is 4, 6. So y is equal to minus x minus 4 plus 6. This is cube root. And it is 0 minus 2. So y is equal to a cube root of x minus 2. So finally we are done with these graphs. Thank you. Okay, so we are starting absolute value functions, parents in piecewise functions. Okay, consider the function f of x equal to 2x minus 8 minus 5. Just what to know to find the fractions. So the function can be written as a x minus 8 plus k. So we can write f of x, which is equal to 2x minus 4 minus 5, which can be written as 2x minus 4 minus 5. So the vertex x 4 and minus 5, and it is gradient is 2 by 1. So 4 and minus 5, 2 and 1, 2 and 1, 2 and 1, 2 and 1. This is the graph. And if we extend the arrows, so the graph is touching at this point, and from here so it's going to be 3 when x is equal to 0, y is equal to 3. When x is equal to 6, 7, 8, y is equal to 3 again. Okay, solving absolute value functions. When solving absolute value functions, we have to find all the points of intersection. Depending upon the function, there could be 2 or no solutions. 2 solutions if the absolute value function is like this. 2 solutions if it touches the x-axis at 2 points. One solution if it touches the x-axis at 1 point, and no solution if it does not touches the x-axis. It is more obvious to see graphically, but how does it look algebraically? So let's solve it algebraically. 2x minus 8 is equal to 8. So 2x minus 8 is equal to 8. 2x is equal to 16. X is equal to 8. 2x minus 8 is equal to minus 8. Minus 2x plus 8 is equal to 8. 8 minus 8 is 0. So x is equal to 0. Solve the following absolute value functions algebraically. So algebraically it's very easy to solve. 3 by 2. X minus 1 is equal to 6. X minus 1 is equal to 6 2 is 12 by 3. X minus 1 is equal to 4. X minus 1 is equal to 4. Minus 1 is equal to minus 4.
So absolute value cannot be negative. Okay. Inverse of absolute value functions. Is the absolute value function 1 to 1? Will the inverse of an absolute value function will the inverse of an absolute graph be a function? In order for the inverse to be a function, we need to restrict the domain of the absolute value function. Sketch the graph of the function f of is equal to 1 by 3 x plus 2. So restrict the domain of f of x so that it is 1 to 1. Now about f inverse x. For f inverse x, we will put y in the x and x in the y. So 0 minus 2, 1, 1, 2, 4. Okay, determine the equation of f inverse x. So the function is y is equal to 1 by 3 x plus 2. It can be written as x is equal to 1 by 3 y plus 2, 3x minus 2 is equal to y is equal to f inverse x, and x should belong to 0 say infinity. How we know that the domain of the inverse function is 0 to infinity? Because range of the function is 0 to infinity. So domain of inverse find the inverse of the function this on the domain this. Use function composition to verify that the following are the functions or not.
the absolute value of an entire function. When you take the absolute value of a number, you must make it positive. So what happens when you take the absolute value of a function like f of x graphed over here? Let's see the points of f of x to get corresponding value of the y is equal to mod of f of x. X is equal to f of x, x is equal to mod of f of x. So what will happen in the mod? Minus 10, mod of 5 will be 5, 7, okay. What you can conclude about the relationship between the graph of f of x and the graph of mod of f of x? Consider the function, quadratic function f of x is equal to x minus 2 whole square minus 4. Sketch f of x and sketch mod of f of x. So the vertex x 2 minus 4. Write the equation of each of the for each graph.
Graph the following function showing at least 3 exact points. Okay, find the inverse of each of the following. So it is moving from minus infinity to 1, so we will take the negative side. Positive infinity, so positive side. Switch x and y.
Use function composition to verify whether or not the given functions are inverses. Given int function f of x below gives a graph of mod of f of x provided on the grid. So for mod of f of x, all the function that is going down over here will go on the positive x-axis. So it was minus, let's write the point first. It was
y is equal to f mod of x. How does the graph of f of x compare to the graph of y? F of y is equal to f mod of x. So what will happen that so we are done with this exercise. Thank you. Okay, so today we are going to learn about parent and piecewise functions. So, an introduction to piecewise function. What is a piecewise function? A piecewise functions are just what they are named, pieces of different functions all on one graph. So we have the pieces of different functions and they're plotted on the one single graph. A piecewise function may follow one equation for certain values of x and then follow a different equation for other values of x. The absolute value function is a famous piecewise function. It has two pieces, a line with the positive slope and a line with the negative slope. So as you can see that this is a piecewise function and this is a fence. What is fence? Fence split the function into two neighbors. Split into
2 neighbors. Okay, so now only one neighbor can on the fence, therefore this is close interval 0 to infinity, because close interval 0 to infinity means this can on the fence. So this is because the fence is on by the close interval 0 to infinity, it means that this one will not on the fence, so it is negative infinity to 0, not included, because this side does not on the fence, so it's negative infinity to 0. So the piecewise function f of x is mod of x. If it is mod of x, means it has positive as well as negative. It is positive when x belongs to closed interval 0 to infinity. It is negative when x belongs to minus infinity to 0. So let's come to the question number 1. Graph f of x is equal to minus 3 mod of x minus 2, and then rewrite the equation as a piecewise defined function. So on the domain of x 2 to infinity, so what is the fence? It is x minus 2. So it's going to be minus infinity to 2 open interval to close interval to plus infinity. And this is minus 2. So we're going to move left 1 to 2 left. And this is 3. So 1, 2, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. So this is going to be the line like this. Okay. So now this side of this is minus infinity to 2, and this one side is 2 close interval to positive infinity. Now this is called y is equal to 3x minus 6, and this is equal to y is equal to minus 3x plus 6. So on the domain of positive 2 to infinity, we have y is equal to minus 3 x minus 2, and on the domain of minus infinity to 2, we have y is equal to minus 3 minus x minus 2. So we can write f of x is equal to minus 3x plus 6 for 2 to positive infinity, and 3x minus 6 for minus infinity to 2. So sometimes piecewise functions will be continuous, meaning you can draw the entire graph from left to right without lifting your pencil. Other times it will be discontinuous, means you have a hole or a gap somewhere in the domain. Consider the following graph. Now is h of x is a function. Now there are some questions according to the graph. Okay, so to define that if it is a function or not, we need to do the vertical line test. So this function passes vertical line test, so yes, it is a function because vertical line test passes. Okay. Next, is this function continuous? So if there is a gap between this function, so it means no, it is discontinuous. And at what point is it discontinuous? At point 1. It is a discontinuous function. Okay, so what is the domain of h of x? Domain is the values from x-axis minus 3 to 1, and 1 is included too, and it is moving on, so infinity, so it's going to be minus 3 to infinity. What is the range? Range is starting from 1 and 1 going towards upward, so 1 to infinity. What is h1? Means y is 1, x is going to be, if y is 1, x is going to be 1. Write a piecewise equation for the graph of h of x. So h of x is equal to, because here it is 2, and when it is 2, it is 2 from minus 3 to 1, which is not included, and it is x means it is moving on like this from 1, which is included, to infinity, which is not included. So this is how we can write a piecewise function. We will first consider this part. This part is on the point 2, and 2 is from minus 3 to 1. Then we will consider this part. This part is from 1 to the positive infinity. Okay, identify all of the different pieces of the function below and write an equation for the graph. First of all, let us study
that how many types of functions are here in this graph. Okay, so this is a parabola. This point is a second function, point y is equal to 6, that is called point. This is number 1, this is point, and this is the third one, that is line. Okay, so identify all three pieces of the function below. So we have identified the three pieces of the function below, and now we're going to write an equation for the graph. So let's say y is equal to, we will write the equation. The equation of the parabola is x square, y is equal to x square, and x square is starting from going towards, because there is arrow, so it's minus infinity, and here it is 2, which is not included. So we will write minus infinity to 2, which is not included. The next function is a point, y is equal to 6. So next is 6, and 6 is the point at x is equal to 2. 4x is equal to 2. The third one is this line. This line is 10 minus x, 4. This line is starting from 2, which is not included, and ending on 6, which is included. So 2 to 6. So we can say that y is equal to, this is the function for y. So I hope you can understand that how to write the piecewise function. Write the equation for the following piecewise defined function. So very easy to write the equation for the piecewise function. Let's say this is a line. Okay, so first of all we are going to write the equation of the line. Number 1 is line, and what is the equation of the line? Okay, equation of the line is going in the negative, downwards towards the negative side, so it's y is equal to minus 6. The second function is this one, and this is a constant function, and it is constant at y is equal to negative 2. The third function is this one, and we know this is the graph of the square root function, so this is a square root function, and the equation will be y is x minus 2. Okay, so now writing the equation of this function, f of x or y, we can write it f of x or y is equal to, first of all we have a straight line, y is equal to minus x, so it would be equal to minus x, and minus x is from minus infinity to minus 1. Then we have minus 2, which is 4, minus 1 to 2, and then we have square root function x minus 2, which is 4, 2 to infinity. Now I'm going to tell you about all these three. We have minus 6, and it is going from towards minus infinity, and towards minus infinity starting from 1, minus 1. The second is minus 2. Minus 2 is starting from minus 1, which is not included because there is a hole, and 2, which is included. X minus 2 square root, it is starting from 2, which is not included, and going towards positive infinity. Okay, the following piecewise function is called the step function because there are steps 1, 2, 3 steps, so this is called a step function. So write the equation for this step function. So very easy, very easy. F of x is equal to, okay, I must don't forget to subscribe my channel because मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें. मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये बात कहना भूल जाती हूँ, और उसको जो है ना लाइक भी लाजमी कर दिया करें ताकि थोड़ी मोटिवेशन रहे. ठीक है, अच्छा. सो वी हैव this is starting from minus 5 and ending on minus 2. So the first one is और ये है किस पे, इट इज़ माइनस 3 पे, y माइनस 3 है, तो हमने ये जो y वाली एक्सिस पे जो होगा ना वो हमने यहाँ पे लिखना है माइनस 3, और जो हम 4 लिखेंगे डेट विल बी द डोमेन माइनस 5 से माइनस 2, माइनस 5 से, और माइनस 2 पे होल है तो माइनस 2 इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट वन हमारा ये वाला जो है ये 0 के ऊपर है. 4 ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस 2 से, और 1 के ऊपर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज 1 पे होल है. और ये वाला हमारा 3 के ऊपर है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा 1 से, और ये 4 है जो कि इंक्लूडेड नहीं है. तो डोमेन इसकी ओवरऑल क्या बनती है हमारी, ये सारी हमारी डोमेन होगी माइनस 5 से लेके, बिकॉज यहाँ पे माइनस 2
के ऊपर एक हमारे पास colored है and 1 is the whole one, so we will consider the color one, so it's included. So 1 is also included and 4 is not included, so it's going to be 4 not included minus 5 included. What is the range? It is starting from -3 and going to +3, so range is -3, then it's going to be 0, and then it's going to be +3. Okay, what is f of 1? F of 1 means the value of y is 1, so y is 1. Not y is 1, sorry, f of x hota hai, so it's x is 1, so it's x is 1, so at 1 the value is 3. F of -1, so x is -1, at -1 the value is, there is no value of the graph, so it's 0. So is f of x even, odd, or neither? So how we are going to check if it is even, odd, or neither? We are going to justify that if it is even, then f of negative of x is equal to f of x. So f of -1 is equal to 0. F of +1 is equal to 3. So it means it is not even, because f of -1 अगर 1 आता, because f of x आता, so ये even होता, so not even. अब if odd, अगर odd होगा तो क्या होगा? f of -x is equal to minus f of x होगा. So f of -1 0 है, minus f of 1 -3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. So not odd. It means ये क्या है, इवन है, ऑड है, या नाइदर है? So it's going to be neither. A doctor's fee is based on the length of the time he spends with the patient. ठीक है, एक डॉक्टर की फीस बेस करती है कि वो कितना टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करता है. फॉर अप टू 6 minutes द फीस $50. For 6 to 15 minutes it's $80, and for 15 minutes it's going to be $80 plus in addition of $5 per minute, about 15 minutes. Sketch the graph to model this situation. Time in minutes, and fee is taken in dollars. So we have 6 minutes and 15 minutes, and then moving on, and the fees is starting from 50, so it can be 20, 40, 60, 80, 100, like this. So about, for up to 6 minutes the fee is 50. So if it is 6 minutes the fee is 50 for up to 6 minutes. From 6 to 15 minutes, if 6 and 15 minutes, then it is 80. From 6 colored one to 15 minutes, it's going to be colored one 80, and after 80 there will be a plus, so we will do like this, because it will keep on increasing as the minutes increases. Write a piecewise equation for t belongs to 0 to 18. So f of t is equal to 50 minutes for 0 not included, 6 not included, $80 for 6 included, 15 minutes included, and 80 plus 5 t minus 15, because $5 per minute above 15 minutes, because total time में से we are going to subtract 15, so multiply by 5, we will get 4, 15 to 18. So this will be the equation. If you were there for 12 minutes, अगर आप 12 minutes you will be there, what will be the fees? So the fees is going to be, for 6 to 15 minutes the fees is 80, so 12 minute fees would be $80. If you were there for 20 minutes, so what will be the fees? Over 15 minutes he charge a flat fee of $80 plus an addition $80. Okay, for 15 minutes it was $80, and
plus an addition of $5 per minute above 15 minutes. So how many minutes were added? 5 minutes were added. And yes, 5 minutes were added, so 5 times he will charge $5 for 1 minute, so it would be 25. So we will add 8, 10, so $105. Graph the following functions and state all over domain and range for the function. So very easy, that we're going to just graph the functions and state the domain and the range. So first of all, we know that okay, x less than 1 and greater than equal to 1, so it means we're going to fence at x is equal to 1, and this is less than 1, so it does not on fence, and it does on fence, it ons fence. Okay, so it's going to be, first of all, we're going to make fence and x is equal to 1. Now we know that x is less than 1, x plus 2, this is not going to on the fence, x plus 2 is not going to on the fence, so we are going to make the table. X plus 2. Okay, so if x is 1, 1 plus 2, if x is 1, 1 plus 2, 3, if x is 2, 2 plus 2, 4, if x is negative 1, negative 1 plus 2, positive 1, negative 2, 0, negative 3, plus 1 plus 2, negative 1. So it's 1, 1, 2, 3, 2, 4, negative 1, 1, negative 2, 0, negative 3, negative 1. So this is how the line is coming. And because they say that x should be less than 1, so I have taken greater than 1 too, so this number is not included. I should not take this number because x should be less than 1, so this would not be included because there is fence set over here, and fence, this number is not included because this is less than 1. तो हम यहाँ पे होल बनाएंगे, this won't be colored, ये colored नहीं होगा. Okay, the other function is x minus 1 का whole square. So इसका भी हम एक ग्राफ बना लेते हैं, x minus 1 का whole square जो कि y होता है. So x minus 1 का whole square at x is equal to 1, 1 minus 1, 0, at x is equal to 2, 2 minus 1, 1, at x is equal to 3, 3 minus 1, 2 का square 4. Okay, so 1, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4. So it's going to be go like this. Okay, so as we can see, the domain is minus infinity से plus infinity, and the range is again minus infinity से plus infinity. इसी तरह we are going to do all of these questions, but I am going to do it for you. For p of x is equal to this very long thing. Okay, ओके, इन दिस माइनस 1 इसमें इंक्लूडेड है और इसमें माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, सो इट मीन्स फेंस विल बी माइनस 1 पे होगी और ये ऑन करेगा फेंस को, ये ऑन करेगा फेंस को. सो हम माइनस 1 पे पहले फेंस बना लेते हैं. अब क्योंकि हमने फेंस बना ली है, सो वी नीड टू नो द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई. एंड व्हाट इज़ वाई? वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस 4. सो लेट्स सॉल्व इट. अगर x माइनस 5 होगा तो इट वुड बी 0, अगर x माइनस 4 होगा तो इट वुड बी माइनस 2,
x माइनस 1 होगा तो इट वुड बी 0. सो x माइनस 2 3 4 5 होगा तो 0, -4 होगा तो -2, -1 होगा तो 0 अगेन. There is some mistakes. -5 or -5 plus 5 0 0 0 0 -4. So it should be -4. If x is -5, -4, -4, -2, -1 0. So the graph is going in this way like this. Okay, so the graph of the other one is x minus 1 modulus. So -1, -1, -1, -2. And because of the modulus it will become +2. 0 0 -1 -1 कॉल ऑफ द मॉडुलस इट विल. मॉडुलस जो है वो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में चेंज कर देगा. फिर हम 1 लगाएंगे 1 -1 0 आ जाएगा. 2 लगाएंगे 2 -1 1 आ जाएगा. 3 लगाएंगे 3 -1 2 आ जाएगा. तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं. -1 1 -1 1 2 0 में 1 आएगा, 1 में 0, 2 में 1, 3 में 2. तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ वी की शेप में बनेगा. जब भी आप मॉड्यूलस का ग्राफ बनाओगे आपको वी की शेप में ग्राफ मिलेगा. तो अब बताओ कि इसकी डोमेन क्या है. सो व्हाट इज़ द डोमेन. सो डोमेन इज़ ओके. सो डोमेन इसकी यहाँ -5 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. -5 इज़ इंक्लूडेड एंड रेंज इज़ फ्रॉम -4 एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. अच्छा, अब सी पार्ट में क्या होगा. सी पार्ट में देर आर ग्राफ्स -2 x + 2. अब हम सबसे पहले देखते हैं फेंस कहाँ पे आ रही है. -4 इंक्लूडेड है, -4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस इज़ दिस ऑन्स -4. ये -4 को ऑन करता है, ये 1 को ऑन करता है और ये दोनों में से किसी को ऑन नहीं करता. तो फेंस हमारी आ जाएगी -4 पे और 1 पे. 1 2 3 4 ये हमारी -4 पे आ गई फेंस और ये 1 को ऑन कर रहे हैं तो 1 पे आ गई फेंस. तो सबसे पहले हमने फेंस बना ली. अब नेक्स्ट क्या करना है. अब ये कह रहे हैं एस लेस दैन इक्वल टू -4, यानी कि -4 से कम होगा तो इसकी वैल्यू -2 रहेगी. यानी कि ये जब -4 से कम, ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट -4 से कम है. दिस वन पार्ट, दिस होल पार्ट इज़ लेस दैन -4. बट दे आर सेइंग कि जब व्हेन इट इज़ लेस दैन -4 इट्स वैल्यू वुड बी -2. सो इट इज़ -2, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस -2. सेकेंड में वो कह रहा है व्हेन इट इज़ ग्रेटर दैन -4, यानी कि ये -4 से भरा और लेस दैन इक्वल टू 1 इसके, यानी कि ये इस फेंस के दरमियान में होगा. ये वाला पोर्शन जब होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू. तो वैल्यू होगी x + 2. अब x + 2 का हम ग्राफ बना लेंगे. x + 2 x + 2 विच इज़ इक्वल टू y. सो अब हम देखते हैं कि x + 2 पे क्या वैल्यू आती है. तो अगर हम -4 रखते हैं, -4 + 2 विल बी 2, -4
minus 3 plus 2 is equal to minus 1, minus 4 plus 2 is equal to minus 2, minus 1, minus 2 plus 2 is equal to 0, minus 1 plus 2 is equal to 1, 0 plus 2 is equal to 2, 1 plus 2 is equal to 3, minus 4 minus 2, minus 3 minus 1, minus 2 0, 0 plus 2, no, it's going to be 0 plus 2, there's some mistake, minus 1 plus 1, minus 2 0, 1 3, so it is going to go over here. थर्ड वन है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 है इस साइड पे, ये पूरी साइड ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें देखते हैं कि ग्राफ की क्या सिचुएशन आएगी। लेट्स सी, सो हियर इट इज़ एक्स वाई, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है इसका नाम हमारा है वाई इज इक्वल टू दिस। ओके, तो लेट्स से जब हमारा एक्स 1 होगा, बिकॉज इट सिचुएशन के ये 1 से सिचुएशन ये है कि ग्रेटर देन 1, तो हम 1 नहीं लेंगे, हम 2 ले लेते हैं। 2 minus 1, 2 minus 1, 2 minus 1, 1, 1 का स्क्वायर 1, minus 1 plus 2 plus 1, 3 ले लेते हैं। ओके, 3 minus 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, minus 4 plus 2 minus 2, सो 2 होगा तो 1 होगा, 1 2 होगा तो 1 होगा, 3 होगा तो minus 2 होगा, तो 1 2 minus 2 होगा। यानी कि द ग्राफ इज़ गोइंग टू, अगर फॉर एग्जांपल 1 होता है, मे बी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट 1 होता है तो 1 minus 1 0 हो जाता है, तो प्लस 2 होगा। 1 होगा तो 1 2 होगा, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम इस पर होल बना देंगे। सो इस तरह से हमारा ग्राफ बने। तो व्हेन हमारे पास 3 फंक्शंस होंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इक्वालिटी जहाँ पे आएगी वहाँ फेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, -4 इक्वालिटी है तो -4 पे फेंस होगा, और +1 पे इक्वालिटी है तो +1 पे। तो हमारे 2 फेंस आ गए। अब जब 2 फेंस आ जाएंगे तो उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कह रही है एक्स लेस दैन इक्वल टू -4, तो -4 की जो ये वाली साइड है ये सारी ऑन करेगी, और इस पर फंक्शन की वैल्यू -2 है तो -2 पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमारा काम हो गया। फिर नेक्स्ट के ऊपर वो कह रहे हैं कि एक्स -4 से +1 के दरमियानी, यानी कि इन बिटवीन फेंसेस ये वाला एक्स +2 ऑन करेगा, तो एक्स +2 की जो वैल्यूज़ हैं वो इन बिटवीन द फेंसेस आ गई। फिर ग्रेटर देन 1 ऑन करेगा तो ग्रेटर देन 1 में ये वाली पोर्शन आएगा, और इस पोर्शन की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। एंड हमारे ग्राफ की जो डोमेन है वो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम 3 पे जा रहा है, और 3 से ऊपर ये मैक्सिमम 1 2 3 पॉजिटिव 3 पे जा रहा है। नीचे एरो है तो नीचे चलता ही जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी -इन्फिनिटी टू +3 विच इज़ इंक्लूडेड। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब इस फंक्शन की हमने इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन क्या है।
Okay, now you will need to use the graph to answer the following questions. This is the line and this is the parabola. This is the square root. F of minus 2 means f of minus टू मीन्स x, तो x माइनस वन माइनस टू होगा तो ग्राफ यहाँ पे माइनस फाइव है. f ऑफ माइनस वन होगा तो ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट. एनी मैक्सिमा, तो इसका जो रियल मैक्सिमा है वो ये है और ये है 0 2 पे. और एनी मिनिमा, और जो इसका मिनिमा है वो ये है और ये है 2 -6 पे. अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस है नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रेक आ रही है तो नो नॉट कॉन्टीन्यूस. डोमेन क्या एफ ऑफ एक्स की, डोमेन है इसकी माइनस इन्फिनिटी से और ब्रेक कहाँ पे आई है इसकी -2 पे. -2 is included but then there is a gap union -1 which is not included towards plus infinity. रेंज क्या है वो यहाँ -6 से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी. उसके बाद एफ ऑफ एस इंक्रीजिंग किस साइड पे है, ये तो डिक्रीजिंग है ना, यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है. ये था -1 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड टू 0 नॉट इंक्लूडेड. यूनियन ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट्स इंक्रीजिंग. ओके, व्हाट इज़ डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन डिक्रीजिंग 0 से ये वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा है सो इट्स 2 0 से 2. और एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है नो, सो राइट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. द लास्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू. ओके क्लास, सो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है ना वो है राइट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये थोड़ा सा जो है ना लंबा और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जगह होगी तो हम लिखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की इक्वेशन. तो लाइन की इक्वेशन के ऊपर वी नो कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, जिसमें से m जो होता है वो हमारी स्लोप होती है. बट नाउ वी डोंट नो कि हमारी इस लाइन की इक्वेशन की स्लोप क्या है. तो हम कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे, एक पॉइंट ये ले लिया है मैंने और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया है. सो हमें पता है कि m फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, y2 क्या है -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 8. सो इट्स गोइंग टू बी -6/4 विच इज इक्वल टू -2 3 6 एंड 2 2 4. सो m हमारे पास m इज़ इक्वल टू -3/2 इस तरह से निकल आया. नाउ हमें k नहीं पता तो हमें ये पता चल गया y इज़ इक्वल टू -3/2x प्लस k. अब हम कोई एक पॉइंट पुट करके फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक -8 4 हम ले लेंगे और हम k फाइंड कर लेंगे. 2 1 2 2 4 8 4 इज़ इक्वल टू प्लस 4 3 12 इज़ इक्वल टू k. 4 minus 12 is equal to k and k is equal to -8. तो अब जो हमारी लाइन की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये होता है m क्या है -3/2 x प्लस k क्या है -8. और ये किस डोमेन के लिए है, फॉर x इज लेस देन इक्वल टू -2, क्योंकि हमें पता है यहाँ -2 से लेस देन इक्वल ये वाली लाइन जा रही है. सो इट्स फॉर x लेस देन इक्वल टू -2. अब जो हमारी सेकंड वन है वो है ये पैराबोला जो हमारा बन रहा है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द पैराबोला. सो अब नाउ टेल मी दैट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द पैराबोला. वी हैव y इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k. और हमें पता है h और k क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0 और 2. तो हम इसको पुट कर देंगे y इज इक्वल टू a
x minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 2. सो इट्स गोइंग टू बी y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 2. अब हमें a नहीं पता क्या होता है, तो हम इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट ले लिया, सो इट इज़ 1 0. 1 0 हमने एक पॉइंट ले लिया. अब हम इसको पुट करेंगे 1 0. 0 इज इक्वल टू a 1 प्लस 2. सो माइनस 2 इज इक्वल टू a. सो a की वैल्यू माइनस 2 आ गई. इसको हम अपनी इक्वेशन में बैक पुट करेंगे. सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ आवर पैराबोला. y इज इक्वल टू माइनस 2. x माइनस 0 का होल स्क्वायर था, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2. और इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हो रही है -1 से और जा रही है प्लस 2 इंक्लूडेड. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 for x is greater than -1 लेस दैन इक्वल टू -2. अच्छा, लास्ट वन जो है वो हमारी ये है स्क्वायर रूट फंक्शन. सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट फंक्शन और इसकी इक्वेशन क्या होती है, कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में वी डू लर्न कि स्क्वायर रूट फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है. सो ये होती है y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच प्लस के. सो x माइनस एच प्लस के, एच और के इसका हमारा होता है वर्टेक्स या स्टार्टिंग पॉइंट. तो दिस इज दिस plus 2 and minus 6. 2 and minus 6. So it's going to be 2 and minus 6. Y is equal to a x minus 2 minus 6. So अब हम a फाइंड करेंगे. अब स्क्वायर रूट फंक्शन हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे. लेट्स से हमने ये पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4 -4. 6 और -4 हमने एक पॉइंट ले लिया. 6 और -4 -4 इज इक्वल टू a 6 minus 2 6 minus 2 4 4 का स्क्वायर 2. a इज इक्वल टू 1 आ गया. तो इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 6. तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये जा रही है +2 से इन्फिनिटी तक, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए. सो द इक्वेशन इज x माइनस 2 माइनस 6 फॉर x इज़ ग्रेटर देन 2. सो इस तरह से जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तो उसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे. स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, इक्वेशंस लिखी थी. तो हम ग्राफ में जो 2 या 3, क्योंकि व्हाट इज़ द पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन वन ग्राफ. तो उन सब ग्राफ्स का जो फंक्शन का कम्बिनेशन है वो यहाँ पे लिखा गया. हम उसको फाइंड करते जाएंगे. वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है. ग्राफ द फॉलोइंग पीसवाइज फंक्शंस एंड state the overall domain and range. तो हमने अब ये functions हमें given है, we're just going to graph these functions and we're going to state the domain and range for these functions. So it's not going to be difficult because we're just going to take 1 or 2 or 3 points. So for example the first one is 2x plus 3 और इसमें point हमने x से less than equal to 1 ले लेंगे, यानी कि x is less than equal to 1 वाले points we're going to take. So x y which is equal to 2x plus 3 and the points we're going to take is less than 1. सो लेस देन 1 में हम सबसे पहले 1 ले लेते हैं. 1 इज़ 2 1 था 2 प्लस 3 5. फिर 1 लेस 1 से कम 0 हो जाता है, 3 आ जाएगा. फिर -1 हो जाता है, -2 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा. -2 पे -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा. इसी तरह दूसरे का भी साथ ही लिख लेते हैं, जो हमारा है x और y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 है. अच्छा, तो इसमें हम लोगों का जो है वो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या उससे भरा हो. तो 1 के लिए 3 - 1 2 हो जाएगा. 2 के लिए 3 - 2 1 हो जाएगा और 3 के लिए 3 - 3 0 हो जाएगा. तो वो कह रहे हैं
लेस देन इक्वल टू 3 हो तो बस ये पॉइंट्स हम ले सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट्स हमें मिल गए हैं तो वी कैन जस्ट इजीली प्लॉट देम। तो इट्स वाज 1503 1 1 2 3 4 5 0 3 -1 -1 1 -1 1 -2 -1, and the first point was not included. Okay, and on the other side it was 1 2 2 1 3 0 1 2 2 1 3 0. This was, and what is the fence? क्योंकि ये less than 1 और less than equal to 1 है, so it ons the fence, ons fence, fence ये on करेगा और 1 के ऊपर fence बनेगी। सो ये हो गया। अब हम डोमेन इसकी लिख देंगे, हमें पता है इसकी डोमेन है -∞ से यहाँ 3 तक, और रेंज इसकी क्या है, नीचे से जा रही है ऊपर से -5 -∞ ये 5 है, और 5 पे होलो सर्कल, इट मीन्स इट्स नॉट इंक्लूडेड। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ। सबसे पहले देखते हैं फेंस कहाँ आएगी। यहाँ x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, सो फेंस इज गोइंग टू कम एट 0। ओके, x इक्वल टू 0 पे +5 है, इसका मतलब जब 5 पॉइंट है द पॉइंट 5 इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं जो कि इंक्लूडेड x, ये हो गया। अब x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, तो इसको हम बना लेते हैं x y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस x। तो इसके कोई से 2 से 3 पॉइंट्स हम विल फाइंड हिम। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ -3 4 -3 1, -4 पे 0 आ जाएगा, और 0 पे 4 + 0 4 2 आ जाएगा, बट 0 वॉन्ट बी इंक्लूडेड, सो 0 पे 2 होगा बट इट्स वॉन्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, -4 पे 0 और -3 पे 1। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफरेंट है, x 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू y। ग्रेटर देन 0 की वैल्यूज़ हम लेंगे, सो लेट्स टेक 2 4 - 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। लेट्स टेक समथिंग 4 4 - 4 इज़ 0, एंड 3 4 - 3 इज़ 1, सो 4 और 0 3 और 1, सो ये इस तरह से सो ग्राफ बन गया हमारा। एंड डोमेन इसकी कहाँ से कहाँ चल रही है, -4 से 4 के दरमियान, विच आर इंक्लूडेड, और रेंज भी इसकी साफ पता चल रही है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 2 एंड 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। यूनियन एक ये वाला पॉइंट भी था, ये भी रेंज में इंक्लूड होगा, y इज इक्वल टू 5। कितना ईजी हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट वन है, अब इसमें देखो फेंस कहाँ बनेगी। x लेस देन इक्वल टू -1 है, x ग्रेटर देन -1 है, यहाँ -1 ऑन करेगा, यहाँ ऑन नहीं करेगा, तो एक फेंस तो हमारी बनेगी -1 पे, और जो +2 है यहाँ ये वो भी ऑन करेगा, तो दूसरी फेंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन +2, 2 फेंस बन गई अब हमारी। 3 हमारे फंक्शंस हैं। अब पहला फंक्शन जो है डेट इज़ -2/3x + 4। So you can imagine that we can just do it like this, x y, यहाँ पे y इक्वल है -2/3x + 4। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें x लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है, यानी कि -1 हम ले सकते हैं। तो -1 जब हम लेंगे तो आंसर वी आर गोइंग टू गेट इट -1 + 4 इज गोइंग टू बी +3 3 3 से कैंसिल, तो -2 आ जाएगा।
-4 हम लेंगे तो we're going to get 0, -7 हम लेंगे तो we're going to get -7, 4, 5, 6, 7, 3, 3, -2 again. So -1 we're going to get -1 पे we're going to get -2, -4 पे 0 and -7 पे -2. अच्छा, the next one is 3x square minus 8. 3x square minus 8. अच्छा, for 3x square minus 8 the condition is कि x -1 से ग्रेटर होना चाहिए. हम -1 ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो अगर -1 लेंगे तो what we're going to get, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 3 - 8 -5. Then if we're going to take 0 -8, then 1 -5 again, then 2 4. So -1 पे -5 होगा जो कि इंक्लूडेड नहीं है, 0 पे 8 होगा जो कि इंक्लूडेड है, 1 पे -5 होगा, 2 पे 4 होगा. ओके, द लास्ट वन इज x 4 से ग्रेटर होना चाहिए. यानी कि 5 कर लो, 4 कर लो. सबसे पहले 4 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, -2 + 4 2 हो जाएगा. ठीक है, और फिर 6 कर लेते हैं. 6 पे 1 हो जाएगा. 4 2 which is not included, 6 पे 1 which is included. तो ये इस तरह से मूव करेगा. सो वी हैव डन विद द ग्राफ. डोमेन हमारी देखो जनाब कहाँ से कहाँ जा रही है. द डोमेन इज़ गोइंग फ्रॉम -∞, कहीं +2 पे जाके ब्रेक देती है which is included. Then union, it is going from 4 which is not included towards +∞. Range is going from -∞ to +4. Okay, so the next is write the equation for each of the following piecewise function. अब हमें भी पता है that this one is the cubic function, this one is a straight line graph, and this is constant. This point is 1 2 3, y is equal to 3, and this is a constant at y is equal to -2. ओके, तो ये दो तो हो गए. मेन मसला हमारा आ रहा है क्यूबिक फंक्शन का. क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ क्या, जो क्यूबिक फंक्शन का हमारा होता है equation. What is the equation for the cubic function? So in the first exercise we have learnt about the equations. So equation of the cubic function is y is equal to a x minus h whole cube plus k. और ये जो एच के होता था ये सेंटर होता था. तो क्यूबिक फंक्शन में यहाँ सेंटर है -1 -2 -3 और 1. -3 1 is the center. So it's going to be y is equal to a x plus 3 का whole cube -3 1 plus 1. ये सेंटर आ गया. अब ए फाइंड आउट करने के लिए हम कोई और एक और पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं -1 -2 और y एक्सिस से 1 है, -2 1. सो क्या हो जाएगा -2. वन का क्यूब 1 है, +1 1 -1 but it should not come 0. It should be ओके दिस ये पॉइंट हमने गलत लिया. -3 -1 है ये पॉइंट. सो ये -1 होगा पॉइंट. तो ये थोड़ी सी हमारी यहाँ पे मिस्टेक है. इट वुड बी -1 ओवर हियर, इट वुड बी +1. सो अगर हमारी कोई ऐसी मिस्टेक हो भी जाए तो वो पकड़ी जाती है. तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 x + 3 का होल क्यूब -1.
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक फंक्शन आ गई है। तो हम यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स अपना लिखते हैं, चलो एफ ऑफ एक्स बाद में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी ये भी हम निकाल लेते हैं। गोइंग टू यूज अनदर कलर। लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इंटरसेप्ट इसका किस पॉइंट पे आ रहा है, absolute value function a x minus h plus k. So this is the absolute value function because it is starting and stopping at specific points, so it's absolute value function. अच्छा, इसका ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डेट इज़ +2 and 2, -2 and +2, -2 and +2, y is equal to a x -2 and +2. अब a फाइंड करने के लिए कोई एक पॉइंट हम ले लेंगे। कोई एक पॉइंट हमने फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट है +1 और 6, 1 और 6 है। तो 6 इज इक्वल टू a, 1 + 2 + 2, 6 - 2 इज इक्वल टू a, 3, 4/3 इज इक्वल टू a। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4/3 x + 2 + 2। तो अब मैं यहाँ पे अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखने लगी हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वेशन थी हमारी 2x + 3 का होल क्यूब -1, और इसकी जो डोमेन थी डेट इज़ -∞ to -2 इंक्लूडेड। सेकेंड फंक्शन थी 4/3 mod of x + 2 + 2, और ये था -2 से 1 ओपन इंटरवल। फिर एक पॉइंट था 3 जो कि है x इज इक्वल टू 1 पे, और एक कांस्टेंट फंक्शन है -2 जो है 1 से 6 के दरमियान। ओके, इसी तरह वी आर गोइंग टू फाइंड दिस फंक्शन पार्ट बी। इसमें अगेन वी हैव अ मॉड्यूलस फंक्शन y इज इक्वल टू a x minus h plus k। ओके, सो ये जो हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन है इसमें h और k क्या होंगे, 1 2 3 -3 और 0। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू a x + 3 और +0 हो गया। ठीक है, अब a फाइंड करने के लिए एक पॉइंट ये ले लेते हैं डेट इज़ 1 2 3 0 and 3। सो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a, 0 + 3, 3 is equal to a 3, so 3/3 is equal to a is equal to 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी y is equal to x + 3, जो कि इस फंक्शन की इक्वेशन होगी y is equal to x + 3। ठीक है, अब ये वाला हमारा ग्राफ कौन सा ग्राफ है? सबसे पहले यू शुड नो कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। Just think for a moment at which type of graph is this.
दिस इज़ वन ग्राफ, दिस ये जो रेड वाला मैंने प्लॉट किया है। तो अब हम इसको देखने लगे कि ये कौन से वाला ग्राफ है। द गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड इन अ कर्व्ड वे। Like this, so it seems to be quadratic function graph. ओके, सो इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, जिसमें एच और के वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, +2 और -5। सो y इज इक्वल टू ए एक्स एट के is the vertex and vertex over here is 2 and -5. Okay. Now we are going to find a. A को find करने के लिए we will take any one point of the graph. So let's suppose हमने ये point ले लिया। ये point क्या है, 1 2 3 and 4। 1 तो 9 आ गया। So it can be written as y is equal to 9 x minus 2 का whole square -5. Let me think, it's -5. The point is wrong, 3 or -4, वही I'm thinking it should be -4, -4 plus 5 would be +1, so it should be +1 over here. Okay, the last graph जो है वो ये वाला है, ये वाला ग्राफ जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ। तो ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, दिस इज समथिंग आई थिंक okay, this is square root function. सो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के, और एच और के वर्टेक्स होते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वर्टेक्स इज 5 and 4। सो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 5 प्लस 4। एंड अब ए फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू डू इज, एक पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ले लिया 6 और 3, तो इट्स गोइंग टू बी 3 इज इक्वल टू ए 6 minus 5 plus 4, 3 is equal to a 6 minus 5 1 plus 4, 3 minus 4 is equal to a is equal to -1. So जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो y is equal to -1 x minus 5 plus 4. So अब हम जब अपना फंक्शन लिखेंगे, देखो इसमें 3 फंक्शंस जो हैं वो मर्ज हुए हुए थे, तो उन तीनों फंक्शंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। और अब जो हमारा फाइनल फंक्शन आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था -∞ से 2 तक। फिर उसके बाद हमारा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 क्वाड्रेटिक फंक्शन था, एंड इट वाज गोइंग फ्रॉम 2 to 5, एंड द लास्ट वन वाज स्क्वायर रूट फंक्शन एक्स -5 plus 4, and it is going from 5 to +∞.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन इक्वेशन फॉर द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनके लिए हमने ग्राफ हमें गिवन है, इनके लिए हमने इक्वेशंस ढूंढनी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशंस फॉर दीज ग्राफ्स। लेट्स चेक देम आउट। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज मूविंग, this one, this is the line. Okay, the second one is constant. Constant तो सबसे आसान होता है. And the third one is a parabola. Okay, so first one की जो इक्वेशन होती है that is y is equal to mx plus c, और we are going to find m y is equal to mx plus c. c जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है, and we really don't know what is the y intercept, but if we can extend this line, अगर हमें y इंटरसेप्ट ना पता हो तो हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं. we will do m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, we will get the y intercept. बट अगर हम एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे 7 पे दे रही है, सो y is equal to mx plus 7 हो गया. बस स्लोप फाइंड करने वाली रहेगी. वी गोइंग टू टेक एनी टू पॉइंट्स. लेट से ये पॉइंट, हम दो पॉइंट, एक ये पॉइंट ले लेते हैं. ये है x, इसके ऊपर है x है -4 और y है -5. तो ये होगा -5 इज इक्वल टू m -4 प्लस 7. -5 -7 इज इक्वल टू -4m. -12 over -4 is equal to m. 4 times 3 is 12. ठीक है, तो y is equal to 3x plus 7, ये लाइन की इक्वेशन आ गई. उसके बाद कांस्टेंट है, पैराबोला की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to a x minus h का होल स्क्वायर प्लस k. तो h और k क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं, और वो यहाँ पे क्या है? 3 और 2 है. सो y is equal to a x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 2. अब हम एक पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट ले लिया 6 7 और -2. तो इस पॉइंट के थ्रू वी विल फाइंड a, 4 ओके. सो द पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास आई है, वो क्या आई है? यहाँ पे आई एम राइटिंग लाइक ओवर हियर, y इज इक्वल टू, कंप्लीट एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं जगह बना के. यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 3x प्लस 7, जो कि लाइन की इक्वेशन थी, और डोमेन थी -4 से -1 इंक्लूडेड. फिर कांस्टेंट था 4 के ऊपर, जिसकी डोमेन थी -1 से 3 नॉट इंक्लूडेड. और लास्ट था x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 2, और इसकी डोमेन थी 3 to 7 इंक्लूडेड. यूज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स टू ग्राफ मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स. अच्छा, जो मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स होता है उसमें ये होता है कि जितने भी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी जो कि बिलो ज़ीरो होती हैं, यानी कि ये जो ये वाला एक्सेस है हमारा, इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और ऊपर वाला सब कुछ वैसे ही रहते हैं. तो पहले हम ऊपर वाला प्लॉट कर लेते हैं. -1 -2 और -2.5 पे यहाँ पे एक पॉइंट है, 2.5 पे एक पॉइंट है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है -4 -1 पे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो दिस इज़ द लाइन. नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट आ रहा है 3 के ऊपर, और 3 इंक्लूडेड नहीं है. फिर वो स्टार्ट कर रहा है 1 2 से, इट्स गोइंग टू 5 एंड इट्स गोइंग टिल 6 7 लाइक दिस. ये सारा पोर्शन तो ग्राफ का वैसा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा. ये -5 की जगह ऊपर जाके +5 के ऊपर जाके लैंड करेगा. और डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से? ये -4 के ऊपर है,
सो इट इज़ एट -4 एंड -5 इट्स गोइंग टू बी -4 एंड +5. सारी y वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं. -4 यही पॉइंट बनेगा. So this will be the modulus function graph. Consider f of x is equal to 5 minus mod of x minus 4. Sketch the graph of f of x. तो अब हमने f of x का ग्राफ बनाना है. तो x -4 अगर हो हमारे पास तो हमें पता है कि हमने पॉजिटिव साइड पे जाके 4 को अप्रोच कर लेना है. और +5 है तो 1 2 3 ये 5 के ऊपर पॉइंट आ जाएगा. फिर ये -1 के हिसाब से स्टेप डाउन हो रहा है. 1 1 इधर, फिर ये 1 1 इधर, ऐसे होगा क्योंकि ये -1 है तो इट्स गोइंग इन द डाउनवर्ड साइड. तो इट्स समथिंग ग्राफ इस तरह से बनेगा. नाउ एफ ऑफ एक्स जो है हमारा फिंस जो है वो 4 के ऊपर आ गई है फिंस. और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x +9 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए, और x +1 -इन्फिनिटी से 4 के लिए, और 4 के ऊपर फिंस आ गई. इसको हम सॉल्व भी करते हैं. 4 - x -4 x -4 4 - x +4 -x +8 should be +8, and the other one will be 4, sorry it's 5 - x -4 5 - x +4, so 9 - x, so it's correct. Okay, -x +9. The other one would be 5 minus, because here we're taking positive one, we're taking negative one. -x +4 5 + x -4 x +1. So इस तरह से एक दफ़ा we're going to solve for the positive, one time for the negative, we will get the two equations. Find the inverse of f of x. For x belongs to 4 to positive infinity. So f of x is equal to -x +9, क्योंकि 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -x +9. So f of x is equal to -x +9. y is equal to -x +9. Now switch x and y. So क्या आ जाएगा? 4 -infinity to 5. Consider g of x is equal to 3/2x -9. ठीक है. स्केच द ग्राफ. अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 3/2x -9, not 6, because there is, okay, let's suppose it is 6. Okay, 3/2x -6, so it's going to be at 6. Now it's 3 up to 1 2 3 up to 3 up to, so it's going to be 1 2 3 up 1 2. Graph is going to go like this. ठीक है. अच्छा, 3/2 x -6 वी कैन राइट 3/2x -6 3/2x -9 को हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले 6 पे पॉइंट और 6 पे हमने लगा दिया. अच्छा, अब हमने पीसवाइज फंक्शन पे इसको कैसे लिखना है? f of x is equal to -3/2x +9, जो कि है -इन्फिनिटी इंक्लूडेड से 6 इंक्लूडेड, और 3/2x -9 जो कि है 6 से पॉजिटिव इन्फिनिटी. अंडर टू कंडीशन, व्हाट कंडीशंस ये विल बी इनवर्स ऑफ g of x?
So g of x would be equal to 3 by 2x minus 9 for x is less than equal to 6. So g inverse x is equal to minus 2 by 3x plus 6 for x is greater than equal to 0. सो फाइनली वे डन विद 6.3. मैंने कोशिश की है कि इसमें एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक ग्राफ बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको उनको बताऊँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. अच्छे से वीडियो देखिएगा. कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. सो आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू सो डैट आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलस को सीख सकें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. Okay, so consider the function f of s graphed at the right. So this is the function which is graphed at the right. अब हम देखेंगे that this is function 1, this is function 2 and this is function 3. So fence कहाँ पे हो रहा है? This is the fence over here and fence over here. अच्छा, very easy. f of 1 क्या होगा? f of 1 यानी कि x 1 होगा तो y की वैल्यू 1 है. x 1.5 होगा तो y की वैल्यू 3 है. x 2 होगा x2 होगा तो y की वैल्यू 3 है. x माइनस 2 होगा तो y की वैल्यू 4 है. राइट द पीसवाइज इक्वेशन टू डिस्क्राइब दिस फंक्शन. अब जो हमारा काम है वो थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा लेंथी होता है इक्वेशन को लिखने वाला काम, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है. एंड यू नीड टू टेल मी दैट विच इक्वेशन इज दिस. ओके, सो दिस सीम्स टू बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? नंबर 1 वाली इक्वेशन पे आई एम गोइंग टू वर्क. इट इज़ y इज इक्वल टू a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k. ओके, तो अब मुझे बताओ कि एच और के यहाँ पे है वर्टेक्स. वर्टेक्स यहाँ पे क्या है? ओके, अब ए फाइंड करने के लिए हम एक पॉइंट 1 1 ले लेते हैं. तो 1 1 पॉइंट के ऊपर जब हम गोइंग टू वर्क, सो वी विल गेट ए इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, एंड द इक्वेशन इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1. द डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 विच इज इंक्लूडेड. लाइन नंबर 2 की जो इक्वेशन होगी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो इट इज़ फॉर x इज इक्वल टू 3. And the third one has the equation that is x. So now I'm going to write the function over here. F of x which is equal to x square for minus infinity to 1, 3, 4, 1 से 2, x 4, 2 से infinity. Okay. At Crazy Kids Boat Rental, it costs $20 to rent a canoe, and you can use it for up to and including 4 hours for this price. Additional time is $5 per hour. Okay. So sketch the graph to show the cost of the renting. तो cost of the renting कैसे show हो रही है हमारी? Renting कौन from crazy up to 8 hours where x is the time in the hours. Please show the labors. Write the piecewise equation. So C of x would be equal to $20 to rent a canoe for up to and including 4 hours. 4 hours तक, यानी कि 0 से 4 hours तक. $25 5 पर आवर चार्ज होगा, यानी कि 4 से 5 hours तक. $30 होगा 5 से 6 hours तक. $35 होगा 6 से 7 hours तक. और $40 होगा 7 से 8 hours तक. Because it is saying up to 8 hours, we are going to plot the graph for up to 8 hours, so starting from 0 to 8. So it's going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and here it is
10, 20, 30, 40, 50. Okay, so starting from not included till 4 included, then starting from this not included till 5 included, this not included 6 included, this not included 7 included, 40, 30, 20. No, it wasn't going to start from 10. It was going to start from 20. Evaluate the following h of 0. h of 0 तो लेस देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो वे गोइंग टू evaluate this 0 square minus 4 which is equal to plus 4. h of 1 किस में आएगा, x greater than 0 less than 2, तो 1 इसमें आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/2 plus 4/2 8 9/2. h of 2, x greater than equal to 2 minus 2 plus 4 which is equal to 2. Use the graph of f of x to answer the following questions. So f of minus 9 minus 7 के इक्वल है, f of 0 minus 3 के. ओके, minus 0.0001 minus 7 minus 0.000 plus minus 3. रेंज क्या है इसकी, y belongs to -7 -6 and -3. इक्वेशन ऑफ f of x लिखेंगे. सो f of x इज इक्वल टू -7 होगा जब हमारे पास -9 से 0 है, -3 होगा जब 0 से 3 है, और -6 होगा जब 3 से 9 है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड. Write an equation for the following piecewise defined function. This function is absolute value function. This function is cubic function. And the last one is quadratic function. And this one is point. Okay. अब absolute value function की क्या equation होगी? How to find the absolute value function? Y is equal to a x minus h plus k. So h k क्या है यहाँ पे, +1 and 5. y is equal to a x minus 1 plus 5. अब a निकालने के लिए let's take this point. This is 1 2 1 2 3 -3 and 2. So 2 is equal to a -3 minus 1 plus 5. 2 minus 5 is equal to a minus 4. -3 by -4 is equal to a. A is equal to 3 by 4. Okay, so y is equal to 3 by 4 x minus 1 plus 5. 4 minus 7 which is not included till +1 which is included. सेकेंड तो हमारे पास पॉइंट है क्यूबिक फंक्शन. क्यूबिक फंक्शन का व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर द क्यूबिक फंक्शन? यू शुड नो द इक्वेशंस ऑफ ऑल द फंक्शंस. y is equal to a x minus h whole cube plus k. So this is the cubic function. So what is hk for cubic function? This is 2 from here and 2 from here.
So y is equal to a x minus 2 whole cube plus 2. So let's take one point of the cubic function. Let's take the same point 2 into. No, we can't take the same point. Okay. We need to take another point. It would be then 2.5 from here and 1.7 from here, and it is going to give us a is equal to minus 1 anyways. So I will get y is equal to minus x minus 2 whole cube plus 2, equation of our cubic function. And the last one equation is for quadratic function. Y is equal to a x minus h whole square plus k. What is h and k? It is 4 and 5. Y is equal to a x minus 4 whole square plus 5. To find a, let's take this point 6 1 2 3 6 3. So it's going to be 3 is equal to a 6 minus 4 whole square plus 5. 3 is equal to a 2 whole square is 4 plus 5. 3 minus 5 is 4a minus 2 by 4 is equal to a minus 1 by 2. So the equation is minus 1 by 2 minus 4 whole square plus 5. So I have no space to write the equation for this. So this is one equation, this is the next equation. I'm going to mark the equations. This is the equation, this is the equation, this is the equation. Also let me write the domains. For the cubic one, the domain is 1 3. For this one, the domain is 3 6, and there is another equation minus 2 4 x is equal to 3. So I'm going to again highlight this equation. This one is the domain, this one is the domain. Okay, so the b quiz part. B part has how many graphs? Okay, the first one is absolute value. Absolute value. The second one is going to go the quadratic one. The third one is going to be the cube root one. Okay, so let's solve for the equations of all of the graphs. Absolute value, y is equal to a x minus h plus k. What is h and k for the absolute value graph? This is plus 4 and minus 2. Minus 4 and minus 2. To find a, let's take the value on the absolute value graph. Let's say this is the point 1 2 3 minus 6 and 3. Okay, now going for the quadratic one, y is equal to a x minus h whole square plus k. So what is h and k?
this one 1 and 6 minus 1. To find a, we need to take one point. Cube root. Okay. What is h and k? H and k is a center, and center is plus 1 and plus 3. 1 and 3. To find a, let's take this point. This is 2 and 5. And what is the domain for this function? It is moving from 0 and ending on 9, which is not included. And for this function, this is 4 minus 2 to 0. Okay, graph each of the following piecewise functions. So we are going to graph all of the functions turned by 10. Absolute value function. What is the formula for absolute value function? Y is equal to, okay, y is equal to a x minus h plus k. So what is h and k? It is minus 5 1. H and k is minus 5 1. So it means you are going to do minus 5 and 1. This will be the point. Next you're going to move 5 by 2, 5 up and 2, 1 2 3 4 5 up and 1 2 1 2 5 up 2 right. Then 1 2 3 4 5 up and 2 right. एंड कैन व्हाट इज़ द डोमेन? इट लेस देन इक्वल टू -3. तो ये वाला पॉइंट हमारा -3 पे आ गया, तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे, यहाँ स्टॉप हो जाएंगे. ये ग्राफ हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का बन गया. अब नेक्स्ट है हमारा -1/2. अभी क्यूबिक है, क्यूबिक फंक्शन है. सो क्यूबिक फंक्शन हमारा, व्हाट इज़ अ क्यूबिक फंक्शन? इट इज़ a x माइनस h होल क्यूब प्लस k. सो यहाँ से पता चल रहा है डेट h एंड k है -1 और k 0 होगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी, सेंटर विल बी -1 0 -1 0. ये सेंटर होगा. और शेप हमें पता चलती है अपने a से. a इज़ -1/2. सो द शेप वुड बी, it would be negative sign, so it would be going downward. And what does a tells us? Also this is from -3 to 1, so we can also take the points x y. Okay, for this one I'm doing -3 to 1. -3 is not, x is greater than -3. Greater than -3 means we can take -3, which is not included. So -3 plus 1, -3 plus 1 is -2. -2 cube, 2 to the 4, 4 to side, -8. Minus minus can say 2 4 side, so it would be 4.
If I will take minus 2 plus 1 would be minus 1. Minus 1 cube will be minus 1. So it's plus 1 by 2. For minus 1, it's going to be minus 1 plus 1 would be 0. For 0, it's going to be 0 plus 1, 1 cube, 1 minus 1 by 2. So we can move till less than 1. So we have to move. We can take 1 also. 1 plus 1, 2, 2 cube 8, 2, 4 is 8, minus 4. So let's plot according to this. Minus 3, 4. Let me change the color. Okay. Minus 1, 2, 3, minus 3 and plus 4. Okay. Minus 2 and 1 by 2. Minus 1 and 0. 0 and minus 1 by 2. 1 and minus 4. So the cubic function is going like this. Okay, then there is a point 3. There is another function that is 3. 1, 2, 3. At x is equal to 1. This is the function. Now there is another function, the last one, 6 minus x. So let's get some values for this x and y for 6 minus x. For 6 minus x is greater than 1, means for 1, 6 minus 1, 5. For 2, 6 minus 2, 4. For 3, 6 minus 3, 3. 1, it's going to be 5, it is not included. And even here, these were not included. 1, 5. For 2, it's going to be 4. For 3, it's going to be 3. So this is going to keep on going on in this way. And we have fence over here. Okay, the next part is we again have the function and we're going to draw the graph for this function. Okay. 1, 2, 3, minus 2x plus 1. Maybe it is mx plus c, y is equal to mx plus c, so it's a straight line. So m is the slope, c is the y-intercept 1. At 1 there would be a y-intercept and slope is minus 2. So for the slope minus 2, x is less than equal to minus 1. This is a cubic function 2x cube. Let's quickly take the values. X is greater than minus 1. Minus 1 cube is minus 1. Between minus 1 and 1. So we can take 0. And we can take 1.
sorry, minus 1. Okay, so the third one is this one, and we can do it. For 1 it's 2, for 2 it's 3, for 5 it's 4. और रेंज जो है वो डेट इज़ -2 to positive infinity. Okay, the last one, the C part. Okay, the second one, -x -1, and the x is from greater than -5 less than equal to -1, so -5 plus 5 -1 -5 plus 5 plus 5 -1, 4 square root 2 -1. The last one, the range is x is greater than -1 plus 1, 1 cubed 5 plus 1 6, x 0 0 cubed root 0 5, x 1 -6. 6.4. Evaluate the following functions for the given value of x. Okay. F of x is equal to 3 if x is less than equal to 2. So f of 2 यानी कि x is less than x is greater than 2. तो 2 -4 यानी कि ये वाला जब -4 जब लेस देन 0 होगा तो -4 वाला केस होगा. 0 भी ये वाला केस होगा. 1/2 यानी कि x is greater than 0 वाला केस होगा. G7 7 कहाँ पे आएगा? x is less than greater than पे आएगा. तो 7 to the 14 14 -1 13. 0 कहाँ पे आएगा? x is less than equal to में 0 plus 5 5 -1 आएगा. x is less than -1 plus 5 4. 3 आएगा यहाँ पे. 3 plus 5 8. ओके. -4 आएगा. x is greater than -2 -3 -4. 3 -2 -4 3 plus 4 is 8 9 10 11.
No. X is greater than -2, -3, -4. X is less than or equal to -2. -4, 2 2s are 4, -6. So -2 less than or equal to -2, -2, -4, -5, -1, 6. X is greater than -2, 6. Those are 12, 3 -12, -9. Graph the following and state the overall domain and range of each of the following functions. X is less than or equal to 0. 2x if x is greater than 0. 0 0 not included, greater than 0 1 2 2 4. So it would be -infinity to +infinity, -infinity to. Okay. X plus 1 when x is less than 0. So plus 1 1 1 1 1 1. This is a step function 2 if x is less than or equal to -3, -3 and less than or equal to -1 if x is between -3, if x is between -3 and +3, so it would be -1, and -3 and +3 are not included. 3 So graph f of x is equal to 4 minus 2x minus 6, and rewrite the equation as a piecewise function. So f of x is equal to minus, for example, 2x minus 6 plus 4. So I can write it minus 2 x minus 3 .
Okay, so for the absolute value function, for example, I'm supposing this y is equal to minus a x minus h plus k. So h and k are minus 3 here. So 3 and 4. 3 and 4. This will be the point. And a is going to be 2. So we're going to take 2 steps down. 1, 2 and 1 step. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Graph the piecewise function, write an equation for f of x. Let's divide this function. The first part of this function is like this one. This is a quadratic function. The second part of the function is this one. This is again a quadratic function. The third part of the equation is this one, and this is an absolute value function. So for absolute y is equal to a x minus h plus k. So we can see that h and k are 6 and 4. So it would be a x minus 6 plus 4. And a is going to be maybe half. Let's calculate a, taking this point 4, 0. Minus 2, which would be 2, which would be 2 times 2 is 4. So it would be minus 2. So for absolute y is equal to minus 2 x minus 6 plus 4. Okay, the quadratic function is y is equal to a x minus h whole square plus k, and h and k are 0, 0. So y is equal to a x square. And to find a, let's take one point. Let's take this point. This is the point here, 2 and minus 4. 2 and minus 4. Minus 4 is equal to a and 4. It's going to be a is equal to minus 1. So y is equal to minus 1 x square, or y is equal to minus x square. And what is the range? It is from minus 2 to 4, minus 2 to 2. And this is going from minus 2 to okay, the last one is quadratic function. X a is equal to plus h whole square plus k. Okay, h and k are here 1, 2, minus 2 and minus 4. Minus 2. To find a, let's take one value. This is the point 5 minus 5. Minus 5. Minus 5 plus 2, it would be minus 3 square is so I have highlighted all of the equations. Okay,
ग्राफ मॉड एफ ऑफ एक्स। सो मॉड एफ ऑफ एक्स में क्या होगा कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे और नीचे वाले सारे पार्ट्स आर गोइंग टू गो अप। इस यहाँ पे -4 है, सो हम यहाँ पे -4 के ऊपर एक पॉइंट लगा लेते हैं और ये था पॉइंट हमारा -5 पे एक पॉइंट था। ये एक ग्राफ ऐसे जा रहा था, बट यहाँ -4 से लेके इट्स गोइंग टू बी -2। दिस पॉइंट इज -2 -4, तो इसके वाई वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। इट विल बिकम, नहीं, दिस पॉइंट इज -2 from the x-axis, -4 from the y-axis, so it will become -2 from the x-axis plus 4 from the y-axis like this। फिर ये 0 0 जो है ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये वाला पॉइंट है +2 -4, सो ये बन जाएगा +2 +4, यानी कि आपकी सारी y पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर ये पॉइंट आपका है 4 0, ये ऐसे ही रहेगा। और ऊपर वाला आपका है ये पॉइंट 6 4 ये भी ऐसे ही रहेगा। 7 8 8 0 भी ऐसे ही रहेगा। और 10 1 2 ओके। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो अभी कौन कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट फंक्शन। द सेकंड फंक्शन जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज अ सिंपल लाइन। द लास्ट वन जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इट इज़ क्वाड्रेटिक। ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द स्क्वायर रूट फंक्शन? y is equal to a x minus h plus k, where h and k are the center point of the starting points, so it's 0 5। अच्छा, अब now we're going to take any one point। let's take, हम ये point ले लेते हैं 1 2 3 और ये है -4 3। अच्छा, so we have -4 3, so it's going to be 3 is equal to a square root of x square root of x would be a negative number। For the time being, we will take it as a positive number so that we can find the square root, because negative of the square root never exists, but we'll consider as it is +4, so we will get -1। and what will be the domain for this function? This is the first equation। अच्छा, what is the equation of the line? Okay, so equation of the line is going to be -3/2x plus 5 for 0 to 2। The last one is the quadratic equation। I was choosing this color। okay, y is equal to a x minus h whole square plus k। so what is h and k over here? 2 and 1। so y is equal to a x minus 2 whole square plus 1, and we need to find a।
Let's take this point. This is 5 and minus 2. Minus 2 is equal to 5 minus 2 whole square plus 1 minus 2 minus 1. 5 minus 2 is 3, 4, 5, 3. 3 square is 9. So minus 3 over 9 is equal to minus 1 over 3. So the equation would be y is equal to minus 1 by 3 x minus 2 whole square plus 1. And it would be for 2 to infinity. Question number 6 and 7. Okay, question number 6 is we are given with the equations and we are going to draw the graph for the equations. First of all, we have to do the graph for the equations and we need to find all of the following. Okay, the first of all, the graph is going to be for the graph we need to find the values of x and y. Okay, for the first graph, for example, okay, x is less than equal to minus 5. So we can take x as minus 5. Minus 5, it will be give minus minus plus 5 was 20, 0. So minus 6. Okay, so the next one is x, y, and here we are, x is greater than minus 5, so we can do minus x is greater than minus 5 and less than minus 3. Let's do it on minus 3, which won't be included. Minus 3 plus 12, 0. Minus 4, which was going to 4, and minus 5, 8. This is minus 3 and the last one is, okay, 2x minus 4. X is greater than or equal to minus 2, so if we put 2 to the 4, 4 minus 4 is 0. Greater than or equal to 2, 3 to the 6, x minus 4, 2, square root of 2 is 2. Okay, let's make the graph now. 2, 0, 4, 2, 10, 3.9. Okay. Minus 3, 0, which is not included. Minus 4 plus 4, minus 5, 8. Minus 5, 0. And there was minus 3 from minus 3, x is greater than or equal to minus 3, and then it is moving on. X is greater than or equal to minus 3 less than 2. So what is the domain of this graph? So domain is the values of the x-axis. Range is minus 3 union 0 to infinity, minus 5, 2, minus 4, minus 8, minus 20, which is equal to 12, minus 3,
Question number 7. Again, we're given with a function and we need to graph this function. Okay, so the first one, there are 4 parts of this function. Okay, 5 by 3x plus 4. X is less than -6. So if we will take -6, it would be 0. -6, 3 2s are 6, 5 to the -10, -4, won't be 0, -4. X is less than -6. X is equal to -6, 5p. X is less -4, sorry. Okay, -6 पे 1 2 3 -4 है. Okay, and -4 is going downward, and the other one is x is equal to -6 on -6 पे 5 यहाँ constant है. Okay, अच्छा उसके बाद we need to go for the third one. If we will calculate this, we will get x is greater than -6, यानी कि we can put x is -0 put कर दें, 2 0 तो 0, 4 -0 4 -2. The last one is x square -5. Greater than 2 means it can be 3 square 9, 9 minus 5 4. For 3 it's going to be 4. Write the equation for the following function. Okay, this is the function and this is a cube root function. And for the cube root function it is -2 -1. This is a quadratic function. Let's first solve the cube root function. Okay, what is the formula for the cube root function? Y is equal to a cube root of x minus h plus k. So y is equal to a cube root of x plus 2 minus 1. Let's take this point. This is -5 plus 2. This was not the exact point.
This is a cube root function, but y is equal to a cube root of x minus h plus k. Y is equal to a cube root of x plus 2 minus 1. Okay, now taking the point is important over here. Let's take this point. Minus 1 minus 2 minus 3 and 1. Okay, y is equal to 2 cube root of x plus 2 minus 1, and the domain is minus infinity to minus 1. Now the next one is the quadratic function. This one is a quadratic function. For the quadratic function, it is y is equal to a x minus h whole square plus k. H and k are 0 0. X minus 0 whole square plus 0. Y is equal to ax square. Taking any one point, let's say take this point. This is 1 and 3. So 3 is equal to a1. So a is equal to 3 minus 3. So the value is going to be y is equal to minus 3 x square minus 1 to 1. The last one is the absolute value function. Okay, absolute value function, it is y is equal to a x minus h plus k. And what is h and k? It is 1 2 3 3 and 6. To find a, let's take the point, this one, 5 and 1. Solve this one. The graph f of x is shown below. Find the f inverse x. First of all, we need to know what is the equation of f of x, and then we're going to find f inverse x. But this is sometimes very easy, because this is y is equal to a x minus h whole square plus k, and h and k are minus 2 and plus 5, so we will get a x plus 2 whole square plus 5. So now we need to find a. We can take this point, this is plus 1 and minus 1. Minus 1 is equal to a 1 plus 2 whole square plus 5. Minus 1 minus 5 is equal to a 2 plus 1 3. 3 square is 9.
Okay. The next one is use the composition to show whether these are inverses or not. Okay. So because f of x and g of x are both giving x, so it is, so basically this function is going to turn into f of x is equal to minus 3 x plus 4 and f of x is equal to plus 3 x plus 4, and we're going to consider the positive one. Alhamdulillah, we're done with this exercise too, so hope you understand it. Must subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz. Starting the review exercise. Okay. Graph each function f of x is equal to minus 1 by 2 x plus 1 minus 4. The vertex will be minus 1 minus 4. And the function is 1, 2. In the negative direction, 1 by 2, 1 by 2. The domain would be minus infinity to plus infinity, and range would be minus infinity to minus 4, which is 2x plus 2 whole cube plus 7. The center would be minus 2, 7. So it would be minus 2, 6, 7. Okay. And then it would be Next function is square root function. This is cubic function.
square root function. Vertex is equal to 6, 3 reflected over y. So it's going to be y is equal to x minus h plus k. Y is equal to x minus 6 plus 3. So let's take this point. This is 5